The Congress has accused the BJP of selectively using the Ram Mandir issue for political gains. Now, after BJP's manifesto talked of the Ram Mandir, the party reiterated its commitment to construct a temple in Ayodhya. Take a listen to the multitude of reactions that have come in across political parties so far. This has nothing to do with Hindutva or Atva. This is simply a developmental program, and the issues which are culturally important have been also adumbrated in it. This we have been saying, even our last manifesto, our stands are the same. And Hindutva has never been an issue of elections, you see. This is an election manifesto based for the development and governance of the country. And that is a cultural issue, simply gives an importance to what is culturally important for us. But the major part of this manifesto, we'll see, is both for development, governance, promotion of India's image outside, keeping India intact, giving a proper leadership. These are the major issues. मुझे तो मालूम था कि इन लोगों में राम के प्रति निष्ठा नहीं है। केवल राम के नाम का, धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका राजनीतिक उपयोग किया। यहां तक कि अगर कोबरा पोस्ट को आप देखेंगे तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि जब तक कुछ हिंदू लोग नहीं मरेंगे तब तक इस आंदोलन में जान नहीं आएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। 2004 में इन्होंने कहा था विशाल मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद से इन्होंने मंदिर की बात करना छोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी युग की समाप्ति का दिन है। अब से 16 साल पहले उन्होंने राष्ट्र से वायदा किया था कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हमारे एजेंडे से बाहर रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सवालों को दोबारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में जोड़ करके अटल लीग को अलविदा कह दिया है। राम मंदिर के बारे में ये कहा गया कि संवैधानिक जो ढांचा है उसके तहत कोशिश होगी राम मंदिर बनाने के लिए। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा था, संविधान के अंदर कोई प्रावधान था उसके लिए, वो काम तो किया ना। तो उद्देश्य तो स्पष्ट है कि अभी भी संविधान की बात तो चलती रहेगी, लेकिन उनका ये हिंदुत्व एजेंडा को पूरा कर। बीजेपी हैज नाउ कम आउट इन टू कलर्स under the guise of respect for the constitution. They have again come out with the slogan that Ram Mandir should be constructed. It is definitely with the intention to consolidate Hindu vote in the country. Its communal character has come out in the open once again, giving a warning to all those who believe that Narendra Modi is a stronger man who can rule the country and bring the country out of the crisis. Now the threat of the communalism is absolutely dangerously hanging over the head of the country. Insofar as the Ram Mandir issue is concerned, they are repeating and reiterating what they have been doing in the past, that Ram Lala hum aayenge, mandir wahi banayenge, par taarikh nahi batayenge. So they are not committed to anything in this country, and they want that the young India should engage itself in violence, in falsehood, and also in trying to spread communal hatred. This is what I say the communal agenda is. Have Hindus stopped worshipping Lord Ram ever? We do worship those who are believers. I do. So many millions and millions of Hindus. So those who have